क्या आपको भी एक्सेल में मल्टीपल शीट्स को कंबाइन करना है? मैनुअली कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और अगर फ्यूचर में कोई नया डेटा ऐड करना हुआ तो उससे भी मैनुअली जाके अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक दिखाने जा रही हूँ जिससे ये काम हो सकता है कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, welcome to my channel Analytics with Divyanshi. So in this video I will show you how to combine multiple sheets data into one sheet. Let's start with। तो हमारे पास ये एक एक्सेल फाइल है जिसमें हमारे पास जनवरी, फरवरी एंड मार्च का डेटा है। तो अब हमें इसे एक शीट में कंबाइन करना है। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। नाउ क्लिक ऑन डेटा टैब, गेट डेटा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर एंड नाउ क्लिक ऑन न्यू सोर्स, अदर सोर्सेस, ब्लैंक क्वेरी। Now we will type a formula here, equals to excel.workbook parenthesis file.contents again parenthesis। अब इसके अंदर हम अपनी जो वर्कबुक है उसका पाथ पेस्ट करेंगे जिसमें डेटा है, then comma, and for headers we will write true here, then again comma and true and then enter। अभी जो हमारा मेन डेटा है यानी जो टेबल्स है वो इस डेटा कॉलम में है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे नेम कॉलम के साथ एंड बाकी जो अदर कॉलम्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। अभी ये जो एक्सपांड का बटन दिख रहा है डेटा कॉलम में, हम इसे क्लिक करेंगे, देन अनचेक दिस, नाउ ओके। अभी हमारा जो जितना भी डेटा था वो सक्सेसफुली अपेंड हो चुका है, यू कैन सी दैट। नाउ वी विल गो टू ट्रांसफॉर्म टैब, डिटेक्ट डेटा टाइप टू मेक श्योर दैट एवरी डेटा टाइप इज करेक्ट। नाउ गो टू होम टैब, क्लोज एंड लोड, and now the appended data is successfully loaded in one sheet. Now if we will add another sheet here, now save it. Now open that master sheet again, then click on refresh, and now you can see that the data is appended here. Now if we will add any data there or update any data there, let me show you. I am adding a data in January sheet. Now save it and again go back to the sheet, refresh it. Now if you will see the January data, you can see that new record here. Look at this. So this is it for today. If you like my video then please like, share and subscribe Analytics with Divyanshi.